Hi all. Today we start with a new chapter, your chapter number 22, chemical control and coordination. Okay, we are done with your nervous system. Now let us talk about your endocrine system. We have seen these differences before. Uh, your nervous system, it is an organized network of point-to-point connections. Okay, we have seen this also, that from one point, let us say your eye. Okay, then from your eye to your brain there is a point to point connection like cables or wires, right? And so this is fast acting, while your endocrine system, it depends on chemicals which are called hormones. Okay, and so the message, it is passed on through these chemicals, and it is comparatively slower. Example for this to remember would be posting a letter. Okay, you go to the post office and post your letter. After a few days, the letter is received by the person, right? So just like this, you can remember endocrine system. It is a comparatively slow, and it is from any one part to any other part. There is no point to point connection like wires. Okay, so whatever we will be studying in this lecture or this chapter indeed is your endocrine system. So this chemical coordination system, what is it? Actually, there are so many cells in your body. About billion cells are present in your body. All of these cells cannot be connected to your nervous system now. Like, how is it possible, right? So for example, think of it like that. um, 20 years back, in one household, okay, between let us say 5 or 6 people who live in one house, they used to have a common telephone, right? Only one telephone, landline, and that one landline can be used to contact any six of these. Same way here also, your nerve fibers cannot reach every part of your body, every cell of your body. Okay, so all cells of our body, they are not innervated by the nerve fibers. So there is a special system, or to regulate the cellular function of all of these cells, a special kind of coordination and integration system is present, which is called endocrine system. This endocrine system can reach to each and every cell of your body. The branch of biology which deals with the study of endocrine system is called endocrinology. Okay, so it is a branch of biology where you study all of your endocrine system. Endocrine glands, they lack ducts and pour their secretion directly into the blood. So these glands are also called ductless glands. Endocrine glands, wherever you hear the word gland, it means they are secreting something. Okay, some chemical, some molecule which has to be secreted, to be thrown out. Fine. So these are endocrine glands. What does it mean? It means that they do not have duct. Okay, so that is why they are also known as ductless gland. In the next diagram, I will show you what ductless means. Substances secreted by the endocrine glands are known as hormones. In Greek, the term hormone meant to excite. So because these hormones, they are exciting your cells, they are making your cells do some work, so they are also known as hormones. Shown here are some of your endocrine glands. Okay, you can see the hypothalamus, pituitary, pineal gland, thymus gland, thyroid gland, then pancreas, adrenal glands, testis in males, and ovary in female. So these are some general endocrine glands in your body. Right. Now let us talk about what is this ductless gland and what is gland with ducts. So normally this is what you must have um, maybe understood or studied somewhere. For example, your mucus gland or your sweat gland or even the ceruminous gland that we studied for ear, remember? So all of these glands, they secrete something, right? So for example, here they are secreting water and ions. So all of these cells, they secrete water and ions. These water and ions, they are carried through these ducts. Ducts are tubes, okay?
So there is this tube through which they can be carried out. However, in case of endocrine glands, they are ductless. So you directly have these cells which are secreting something, but that secretion is directly being poured into your blood vessel. Okay, there is no special duct like this, and hence they are called ductless gland. So the main highway through which your post will be delivered is your blood vessel. Okay, तो आज ये जो भी मैसेज है वो आपके ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा. उसमें कोई ऐसा स्पेशल डक्ट होता है नहीं. So these kind of glands are ductless glands or endocrine glands. The other type of glands जो इधर हमने देखा, they are called exocrine glands. Okay, तो endo and exo are your ductless glands and glands with duct. अभी समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? Very good. Endocrine glands are also of different types. Okay, we will study two major types. दो type में होते हैं endocrine glands. The first one is organized endocrine gland, where hormone producing cells are present in cluster. Cluster मतलब एक group है ना, इकट्ठे आपको दिखते हैं ऐसे cells. कौन सा cells? जो hormone बनाते हैं. तो these hormone producing cells, they are present in a cluster or in form of a tissue, and so they are called organized endocrine gland. Example is your pituitary, pancreas, pineal gland, parathyroid, thyroid, thymus, adrenal and gonads. Gonads मतलब testis and ovary. ठीक है, तो ये सारे glands जो है they are of organized endocrine type. The second type is called non-organized endocrine glands. ये glands कैसे होती है कि उनका original function is something else, है ना, उनका majority जो cells है they are doing some other function, but in between these cells there are few cells which are doing endocrine function as well. So the hormone producing cells are present in scattered form. ऐसे scatter हुए दिखते हैं आपको cells. So these kind of glands are called non-organized or diffused endocrine tissue. Example is heart, क्योंकि देखो heart का function क्या है? To pump blood. Liver का function क्या है? Bile बनाना. Kidney का function क्या है? To synthesize urine. Gastrointestinal tract का function है पचाना और absorb करवाना, है ना. तो ये सारे जो है organs, उनका major function कुछ और है. But when you see, then they also have some endocrine cells, but they are scattered. पूरे organ में आपको scattered मिलेंगे. तो ये scattered type के जहाँ पे भी आपको दिखते हैं, they are called non-organized endocrine glands. देखिए example में इधर मैंने दिखाया आपको liver. Liver का अगर आप cross section लेके, if you look at it under a microscope, this is how it will look like. These are called, okay, fine, these are actually from pancreas, my mistake. So ये pancreas है आपका, और pancreas को cut करके अगर आप देखोगे, so this is how it looks like. These are the pancreatic acini. Okay, acini का मतलब होता है ऐसे circular form में, और बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, वो उसका duct है. तो जो भी pancreatic enzymes आपको सूझ रहे हैं, like lipases, proteases, protease में भी अगर specifically आपको बोलना हो, तो you have trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, aminopeptidase. तो ये कहाँ से बनते हैं? They are produced by your pancreatic acini, और वो इस duct के through आपके intestine तक पहुंचेंगे. But in between these acini, जो pink color में दिखा है, you have these group of cells. ये आपको दिख रहे हैं group of cells, right? These are called islets of Langerhans. और ये islet जो है, islet का meaning आप island ही समझ लो, ठीक है, टापू की तरह दिखते हैं. तो this islets of Langerhans are the ones which will produce hormones. तो ये जगह पे हार्मोन बनते हैं. तो पूरा organ जो है, it is not made up of such endocrine cells. Only some parts ऐसे patches में आपको दिखेंगे. That is why they are called non-organized endocrine glands. ठीक है, और इसके बाजू में जो आपको ये दिख रहा है, these are RBCs and that is showing you the blood vessel, है ना. तो वो blood vessel है, directly जो भी hormone बनेगा that will be poured into the blood. So these are the two main types of endocrine gland.
फर्स्ट टाइप इज ऑर्गेनाइज्ड, जो मेजोरिटी सिर्फ एंडोक्राइन ही काम करते हैं, उसके अलावा उसका ज्यादा कुछ काम आपको दिखेगा नहीं. एंड द सेकेंड टाइप इज द वन जिसका मेजर फंक्शन कुछ और है, बट उसके अलावा भी आपको अंदर ऐसे एंडोक्राइन सेल्स मिल जाएंगे थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में. तो दीज आर नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ अभी हम कब से रट्टा लगा रहे हैं हार्मोन हार्मोन हार्मोन. व्हाट इज दिस हार्मोन? सो हार्मोन्स आर नोन एज प्राइमरी और केमिकल मैसेंजर्स, है ना. उनको प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हो या केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हो. हम जैसे पोस्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वैसे ही लेटर की जगह पे इधर आपको सोचना है हार्मोन. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो बिकॉज यू आर गेटिंग सम न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट. However, the hormones are non-nutrient chemicals. वो आपके न्यूट्रिशन के लिए नहीं बने हैं. Okay, their function is for signal. Okay, signaling करना है एक जगह से दूसरी जगह पर. But they are not meant for your nutrition. So they are non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger and are produced in trace amount. Trace amount मतलब बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं. जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है तो आप एक ही लेटर लिखोगे, राइट. या फिर दो तीन लिखोगे कि चलो एक ना मिला दूसरा तो मिल जाएगा. तो सेम वे हियर ऑल्सो इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. It was the first discovered hormone was secretin and it was discovered by Bayliss and Starling. अभी we have to study types of hormone. हमने पढ़ लिया कि हार्मोन क्या चीज है. Okay, it is just a non-nutrient chemical जो प्राइमरी मैसेंजर है, वो एक जगह से मैसेज जो है वो दूसरी जगह तक पहुंचाएगा. This much was discussed in hormone. Now let us study the types of hormones based on their chemical composition. अभी वो काम क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं देखना, बट केमिकली ये हार्मोन जो है वो किस चीज से बना है, ओके, वो कैसा दिखता है, that we are studying in types of hormone based on their chemical composition. So let us start with the first type which is protein or protein derivative आप इसको बोल सकते हो, है ना. हम ब्रॉडली इसको प्रोटीन में क्लासिफाई करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि प्रोटीन में भी अलग अलग लेयर में यू कैन फर्दर डिवाइड इट, है ना. चलो, तो द फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन टाइप इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब होता है उसमें से डिराइव किया हुआ, है ना. तो किसमें से डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड. So amino acid derivative type of hormones are three. ये याद रखना है, ये टेबल आपको साथ साथ में बनाना है ना. बनाते रहो, चलो मेरे साथ. So the amino acid derivative type of hormones are thyroxine, thyroxine या triiodothyronin. That is a different another name of the thyroxine. So these are synthesized from your thyroid gland and they are made from tyrosin, है ना. thyroxine tyrosin आपको याद रहेगा. So from tyrosin which is an amino acid you can make thyroxine. The second is epinephrine जिसको आप adrenaline भी बोल सकते हो. तो epinephrine और adrenaline. Then there is another hormone called norepinephrine or noradrenaline. Both of these are secreted by your adrenal medulla. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के बीच की जो टिश्यू है, ओके, विच इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला. So from adrenal medulla these are synthesized. Then there are the second type which is short peptides. Short peptide का मतलब क्या? तो they are about 9 या 10 अमीनो एसिड लॉन्ग. बस ऐसे 9-10 अमीनो एसिड को इकट्ठा करके एक बना दो चेन, तो that is called short peptide. Short peptide में you have three hormones. Vasopressin and oxytocin are secreted by your hypothalamus slash posterior pituitary. अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में I have forgotten which one is mentioned. Originally, why ऐसे slash मैंने क्यों लिखा है? I will just tell you in brief. Originally, these hormones they are neurohormones. मतलब ये न्यूरॉन्स के अंदर सिंथेसाइज होता है. बट ये न्यूरॉन्स का नर्व एंडिंग कहाँ पे है? तो दैट नर्व एंडिंग इज इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो बनते हैं हाइपोथैलेमस में. द साइटोन हेड, सॉरी, द
cell body or the cyton of neurons is in hypothalamus, but the axon terminal is in posterior pituitary. तो वो सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से होता है बट सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है. तो I have to still look up what it is given in your textbook exactly. I have forgotten. So just have a look and then write down here. Okay, so vasopressin and oxytocin, they are secreted from hypothalamus or posterior pituitary. Then there is MSH, melanocyte stimulating hormone. MSH is secreted from your pineal gland. Fine. So these are the examples for short peptide. The third type is long peptides. ये long peptides जो है उसके अंदर we have four main hormones. The first one is parathyroid hormone, which is secreted by parathyroid gland. Second one is insulin. Insulin तो सबको याद होना चाहिए है ना, आप बहुत सारी जगह पे पढ़ते हो. You must have even heard of it in your biotechnology. तो ये 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है and 51 अमीनो एसिड is still less है ना, बट वो 10 से ज्यादा है, इसलिए you call it long peptide and not a protein. इसलिए उसको पेप्टाइड बोलेंगे, प्रोटीन नहीं बोलेंगे. Fine. The insulin, which is secreted from your pancreas. Then thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin is secreted by your thyroid gland. And adrenocorticotropic hormone, yeah, ACTH for short, is secreted by your adenohypophysis or anterior pituitary. Adenohypophysis is just another name for anterior pituitary. The fourth type of protein type of hormones is glycoprotein. देखो glycoproteins जो है we have studied it in smooth endoplasmic reticulum as well as rough endoplasmic reticulum. ठीक है, तो rough endoplasmic reticulum में proteins synthesize होंगे and on these proteins some carbohydrate molecules are attached. तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को आप प्रोटीन के ऊपर ऐड कर दोगे by covalent bonds, then these proteins are called glycoproteins. Example of glycoproteins is TSH or thyroid stimulating hormone, FSH or follicle stimulating hormone, and LH or luteinizing hormone. So these three are your glycoproteins and they are secreted again from your adenohypophysis, yeah, anterior pituitary. इतना क्लियर है? You have amino acid derivative, then short peptides, long peptides and glycoproteins. तो ये in one way or another they are related to proteins, है ना? So these are your protein type of hormones. The second variety are the hormones made from steroids. ठीक है ना, वो कोलेस्टेरॉल में से बनते हैं. So these are called steroids. Steroids जो है वो general classification है, उसके अंदर you have different variety. For example, you have glucocorticoid from adrenal cortex, मतलब adrenal gland का outer layer. ठीक है, so adrenal cortex, then mineralocorticoid from adrenal cortex. Mineralocorticoid में अगर आपको specific लिखना है then write down aldosterone. ठीक है, mineralocorticoid, हाँ, और in brackets write down aldosterone. तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में लिख लो आप cortisol and cortisone. The cortisol and cortisone are types of glucocorticoid. Aldosterone is type of mineralocorticoid. These are secreted from your adrenal cortex. And finally, you have the three sex hormones, which are testosterone, secreted from your testes, estrogen, and progesterone, secreted from the ovaries. तो ये पांच जो है, they are all steroid in nature. ठीक है, तो इनको स्टेरॉइड बोलेंगे. उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जब आप देखोगे तो दे लुक लाइक कोलेस्टेरॉल. ठीक है, सो दीज आर द टू वेराइटीज. कुछ प्रोटीन या प्रोटीन के टाइप्स हो सकते हैं एंड अदर वेराइटी इज दे कैन बी स्टेरॉइड्स. क्लियर दिस मच? So this is how chemically you can divide the hormones. Functionally नहीं, chemically. ठीक है. Now let us understand some physical and chemical properties of hormones.
ये सम प्रॉपर्टीज, कुछ खासियत हार्मोन्स की. The molecules of most of the hormones are small. So hormones, first thing, they are very small. क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है तो ऐसा बड़ा बड़ा चीज नहीं भेजोगे ना. यू आर सेंडिंग वेरी स्मॉल थिंग कि जितना हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए एंड ऑन टाइम पहुंच जाए. ठीक है. तो द हार्मोन्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल. देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो. मोस्ट हार्मोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर. जितने भी हमने प्रोटीन वाले हार्मोन्स देखे, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, all of those are water soluble. Few are soluble in fat or lipids. जैसे steroid hormones जो हो गए, they are all soluble in fat and they are easily diffusible in tissues. जो भी टिश्यू तक आपको पहुंचाना है उधर, they can easily diffuse. They are secreted in very small quantity because they are very reactive substances. वो small quantity में भी ठीक काम करेंगे, है ना. जैसे वो ओल्ड सेइंग है ना कि यू कैन आइदर सेंड वन लायन और यू कैन सेंड 1,000 sheep. तो 1,000 शीप भेजो या एक लायन भेजो तो वो एक लायन ही काफी है. द सेम वे दिस हार्मोन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो दे आर इनफ. दे आर वेरी पोटेंट. दे आर वेरी रिएक्टिव. रिएक्टिव इसका मतलब पोटेंट. ओके. वो मैसेज पहुंचाने में रिएक्टिव ऐसे बोल रहे हैं. हॉर्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज. उसका एक बार काम हो गया, मैसेज पहुंच गया, देन दे आर डिस्ट्रॉयड. ये याद रखना जरूरी है. जस्ट लाइक योर न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर में आपको याद आ रहा है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ऐसा कुछ एंजाइम था which was degrading the acetylcholine and releasing the acetyl group and choline, right? तो सेम हॉर्मोन्स भी जो है उसका जैसे ही काम खत्म होता है they are destroyed. हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. उनका स्टोरेज नहीं होता है बॉडी में. जब जरूरत पड़ती है तभी बनते हैं एंड देन ओनली दे आर रिलीज्ड क्विकली. एज सून एज देयर फंक्शन इज ओवर दे आर डिस्ट्रॉयड. ऐसे समझ लो जैसे कोई स्पाई मिशन में जाते हो और वो कैसे आपको मैसेज भेजते हैं एंड देन दैट मैसेज इज डिस्ट्रॉयड, राइट. सेम वे. एक्सेप्शन इज थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर जिसको आप T3 T4 हार्मोन बोलोगे. तो दिस हार्मोन इज स्टोर्ड इन योर थायराइड ग्लैंड, है ना. वो जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब आई विल टेल यू. लिवर एंड किडनीज सेपरेट हार्मोन्स फ्रॉम ब्लड. तो अभी ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. सो लिवर एंड किडनीज वो हार्मोन को पकड़ पकड़ के ब्लड में से निकालेंगे एंड दे आर डिस्ट्रॉयड. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर डीकम्पोजिशन इज एक्सक्रीटेड विथ यूरिन. इट कैनॉट बी रीयूटिलाइज्ड. जो भी इसका डिकम्पोज करके डिस्ट्रॉय करके बचा कुचा जो भी है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा एंड इट इज नॉट रीयूज्ड. हॉर्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस. नॉन एंटीजेनिक का मतलब वो एंटीजन जैसे एक्ट नहीं करेंगे कि हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, ऐसा नहीं होता है. ओके. सो दे आर नॉन एंटीजेनिक. उसके ऊपर इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं करती है. Hormones do not participate directly in metabolism, but they control the same in the target cells. वो directly जैसे हम एंजाइम में बोलते हैं ना कि एंजाइम does not take part in the reaction. जैसे ही आप स्टार्टिंग में एंजाइम डालते हो वैसे ही आपको वापस एंड में भी मिलता है. सेम वे हार्मोन जो है इट इज नॉट डायरेक्टली डूइंग एनीथिंग. वो खुद कुछ नहीं करता है. उसका काम क्या है, बस मैसेज पहुंचा देना है. एंड बाय दिस मैसेज द कंट्रोल एंड रेगुलेशन इज seen. ठीक है. तो इट इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन एनी मेटाबॉलिज्म बट इट इज कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म इन द टारगेट सेल्स. अभी फाइनली फॉर टुडेज लेक्चर वी आर स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. मतलब कैसे हार्मोन का एक्शन जो है वो आपको दिखता है. ओके. व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ हार्मोन इज एक्टिंग. So once the hormone enters bloodstream, it can reach almost any cell in the body. जैसे ही वो ब्लड में एंटर कर दिया फिर ब्लड इज लाइक एन हाईवे. तो हाईवे के थ्रू आप कहीं पे भी पूरे बॉडी में पहुंच सकते हो. ईच हार्मोन कैन अफेक्ट ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल व्हिच आर कॉल्ड टारगेट सेल. अभी एक बार मैसेज डाल दिया है ना, वो हाईवे पे आपका पोस्ट लेके निकल पड़ा गाड़ी में, लेकिन वो हर एक लोगों को तो नहीं देता फिरेगा वो लेटर आपका, है ना. वो सीधा आपके फ्रेंड को ही जाके देगा लेटर.
तो same way this hormone, though it is flowing with your blood, it can only affect certain cells which are called target cells. ठीक है, जो इस डायग्राम में दिखाया है आप ध्यान से देखो. This is your blood capillary through which blood is flowing. With this blood you have two hormones. One is hormone number 1 shown in yellow, another is hormone number 2 shown in blue. तो this is your target cell. आपका दोस्त है जिसके पास लेटर पहुंचना चाहिए. तो your target cell only has that specific address, है ना, आपके दोस्त के पास ही वो एड्रेस होगा. तो here that address is called hormone receptor. okay, जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर. तो ये हार्मोन 1 के लिए ही स्पेसिफिक रिसेप्टर है, तो उसके पास हार्मोन 1 ही आके बाइंड करेगा. हार्मोन 2 जो है, जो थोड़ा अलग टाइप का आपको दिख रहा है, दैट कैन नॉट कम एंड बाइंड टू दिस रिसेप्टर. ठीक है, तो जो सेल होगा टारगेट सेल विच हैज दिस रिसेप्टर, सिर्फ उस पे ही जाके हार्मोन एक्ट करेगा. हार्मोन बाइंड टू प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट cell. Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are very specific. है ना, जैसे ये रिसेप्टर है तो it is specific for hormone 1 only. ठीक है, तो वो सिर्फ हार्मोन 1 आएगा तो ही एक्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट एक्ट. तो ये जो भी प्रोटीन से बना रिसेप्टर है, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस हार्मोन 1. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. ऐसे दो टाइप के मेन क्लासेस हो सकते हैं रिसेप्टर के. वन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. ये मेम्ब्रेन है आपकी सेल की, तो ऑन द सेल मेम्ब्रेन व्हेन यू फाइंड रिसेप्टर्स, दीज आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. एंड द सेकेंड आर इंट्रासेल्यूलर. इंटर नहीं है, देखो इंट्रा है. इंट्रा मीन्स विद इन, तो विद इन सेल इसको बोलेंगे आप इंट्रासेल्यूलर. तो सेल के अंदर आपको रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, देन दे आर कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. एग्जाम्पल और मोस्टली दीज आर न्यूक्लियर टाइप, मतलब सीधा आपके न्यूक्लियस के अंदर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे फॉर द हार्मोन. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. ओके, so binding of hormone to its receptor leads to formation of hormone receptor complex. जैसे enzyme plus substrate gives you enzyme substrate complex, same way hormone plus receptor gives you hormone receptor complex. The hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes. कुछ biochemical changes होंगे in this target cell and thus the target tissue metabolism and its physiological function are regulated. तो इस हिसाब से जो भी सेल के ऊपर ये हार्मोन जाके बाइंड होगा, उस सेल की अंदर की जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या मेटाबॉलिज्म है वो चेंज कर सकते हो आप. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हार्मोन, whether it is water soluble or fat soluble, it can have one of the two mechanism of action. ठीक है, तो now we will study the two main types of mechanism of action of hormone. ठीक है, एक हो सकता है फॉर वाटर सोल्यूबल, जो हमने पढ़ा, जो भी प्रोटीन रिलेटेड हार्मोन्स है दे आर वाटर सोल्यूबल, एंड जो भी स्टेरॉइड रिलेटेड हार्मोन्स है दे आर फैट सोल्यूबल. सो यू कैन हैव टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक वाटर सोल्यूबल के लिए और एक फैट सोल्यूबल के लिए. चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. वी विल स्टार्ट विथ वाटर सोल्यूबल हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मतलब ये हार्मोन है, वाटर में सोल्यूबल है, एंड ऐसे वाटर में सोल्यूबल हार्मोन का कैसे एक्शन आपको दिखने को मिलता है. ठीक है, सो हार्मोन इट इंटरैक्ट्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके, ये जो दिखाया है वाई शेप का, दैट इज योर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. दिस यू कैन सी इट इज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऑन द सेल मेम्ब्रेन यू हैव दीज रिसेप्टर्स, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. एंड ये ब्लैक कलर का जो दिखाया है दैट इज द हार्मोन. फॉर एग्जाम्पल इट इज FSH. FSH we have studied, it is a glycoprotein. So glycoprotein is soluble in water. तो वो blood के through सीधा पहुंचेगा ये आपकी ovarian cell membrane के पास. Okay, just for now think of it as cell membrane. जैसे ही वो ये receptor के पास पहुंचेगा, it will bind to the receptor. So you will get receptor and hormone receptor complex. तो ये हो गया आपका hormone receptor complex. Now when the hormone receptor complex is formed, it generates secondary messengers.
अभी ये हार्मोन खुद तो अंदर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, वो आपके डोर पे, लेट अस से योर मदर ओपन द डोर, आपकी माँ ने खोला दरवाजा, तो वो आपकी माँ को लेटर दे के चला गया, ठीक है। तो सेम वे दिस हार्मोन इट इज जस्ट बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, and now this response, this message will be transferred further inside the cell with help of secondary messengers. अभी आपकी माँ ने आके आपको बताया कि this is the letter for you, then your mother becomes the secondary messenger. We have seen that hormone is called primary messenger. So hormone, when it binds to the receptor, it gives out secondary messengers, which in turn regulate the cellular function. Secondary messengers can be cyclic AMP. साइक्लिक AMP जो है उसको आप C small c AMP भी लिख सकते हैं. AMP here is adenosine monophosphate. It it can be IP3. IP3 is inositol triphosphate. Inositol is a type of sugar. वो एक शुगर है और शुगर के ऊपर 3 फॉस्फेट है, इसलिए उसका नाम है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. तो inositol triphosphate can also be one of these secondary messengers. Calcium can also be secondary messenger. इसी हिसाब से diacylglycerol can also be secondary messenger. तो ऐसे सारे secondary messenger होते हैं, okay, which are generated only when the hormone binds to the receptor. These secondary messengers they will go ahead and give out the biochemical response, है ना. वो कुछ enzymes को activate करेंगे, deactivate करेंगे, और इस हिसाब से आपको biochemical response देखने को मिलेगा. These biochemical responses, let us say वो जो भी glycolysis का enzyme है, just an example, उसको activate कर रहा है, तो glycolysis ज़्यादा हो रहा है. Glycolysis ज़्यादा हुआ, then you have a lot of ATP. This ATP is used for growth. So that is growth is physiological response, है ना. So this is how you can see the response being generated by a water soluble hormone which has a membrane bound receptor. तो ये membrane bound receptor है और ये water soluble hormone है, उसका mechanism of action हुआ. Second one is for fat या lipid soluble hormone और उसका mechanism of action. Here the hormones which are steroid in nature and only one exception, एक ही exception है जो है iodothyronin. Iodothyronin मतलब आपका thyroid hormone. तो ये सिर्फ thyroid hormone और steroid hormones जितने भी है, these hormones interact with intracellular receptor. इसका receptor आप देख सकते हो, it is present inside the nucleus. Now the steroid hormone या iodothyronin जो भी, they are lipid in nature. तो जो भी लिपिड वाली चीज है वो नॉन पोलर होगी. नॉन पोलर और लिपिड नेचर वाली जो भी मॉलिक्यूल है दैट कैन इजीली क्रॉस योर सेल मेम्ब्रेन, तो वो सेल मेम्ब्रेन से ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी. आफ्टर क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन इट कैन ऑल्सो क्रॉस योर न्यूक्लियर पोर्स, ओके, है ना. ये न्यूक्लियर पोर है जिसके थ्रू वो अंदर आ जाएगा. इनसाइड यू हैव दिस रिसेप्टर प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर है, रिमेंबर. सो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे जाके आपका हार्मोन बाइंड होगा. जैसे ही हार्मोन बाइंड हुआ, दिस रिसेप्टर कैन नाउ एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, है ना. वो डीएनए पे जाके चिपक जाएगा, जहां पे भी चिपकेगा उधर से उसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू. तो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी विच इज एमआरएनए. एमआरएनए बना तो उसमें से प्रोटीन बनेगा, और जिस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, है ना, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड, दैट विल डिसाइड द फंक्शन. Maybe it is producing new types of enzymes or it is producing new types of receptors. So this can all differ. ठीक है, तो इस तरीके से intracellular receptor के through your mechanism of action is there. Outcome is regulation of gene expression. आपकी gene जो है which is found on the DNA, उसका expression मतलब gene में से mRNA बनना और mRNA में से protein बनना, that is called gene expression. तो gene expression or the chromosome function is regulated by these steroid hormones. ठीक है. So we end the lecture there. This is the list of endocrine glands we will be studying. Next lecture we start with hypothalamus and pituitary. Then we shall discuss thyroid and parathyroid, thymus, pineal and pancreas,
adrenal cortex and adrenal medulla, gonads, and some non organized gland. So, see you next time.